these listing of important topics in economics from where UPSC is asking questions in last 10-15 years, where we can limit ourselves static part. We know what are different topics, what are high yielding topics from where UPSC is asking questions every year. UPSC has started asking more questions from here, financial market in recent years. Fiscal policy and government budgeting, from here also a lot, many questions are asked. सिर्फ रीडिंग करते जाएंगे, मेमोराइज करते जाएंगे, उससे हमारी बात नहीं बनेगी. करंट अफेयर्स बेस्ड, लाइक करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं. So we'll try to identify those topics and we'll try to see what are the static concept of that topic. Hello everyone, my name is Brajesh Mishra and I'm going to take an orientation session for quick revision classes for economics. First, let us start with why this economic subject is important. Everyone knows that. Why it is important? Because every year 15 to 20 questions in prelims are asked. That is roughly 1/5 of the questions in prelims. And if we see what are the important topics in economics from where questions are asked, there is a listing for that. We have these listing of important topics in economics from where UPSC is asking questions in last 10-15 years. We can have external sector, a lot questions are asked from this. Money and banking, then financial markets. UPSC has started asking more questions from here, financial market in recent years. Fiscal policy and government budgeting, from here also a lot, many questions are asked. Sectors of economy, national income accounting, agriculture, inflation, unemployment. These are the topics among others also. Many questions are asked in last 10-15 years. Correct. So these are the topics, are high yielding topics, which we need to focus more because questions are asked from here, from basic concepts and also from current affairs, UPSC is asking questions. If we see the distribution of questions which are coming from static part and from current affairs. So we can see from last 5-6 years ka data, we can find out 60 to 70% questions, we are talking about prelims, are asked from static part of economics and remaining from current affairs. So this makes sense that static part is having more weightage, and from current affairs what happens, we are having budget and economic survey and remaining from news. So we are having a limit here where we can limit ourselves static part. We know what are different topics, what are high yielding topics from where UPSC is asking questions every year. And current affairs, it is coming from budget. So let's say 40-50% questions are coming from budget and economic survey and remaining from other news articles. Correct. So we can limit ourselves because इसकी तो कोई सीमा है नहीं, कितना भी पढ़ते जाओ उतना कम है. But here in static part, we can see 60 to 70% questions are asked. So weightage is more. Weightage ज़्यादा है. Questions का, that means in preparation also we need to put more efforts. तो ये establish हो गया कि static part is important. इसको छोड़ नहीं सकते या फिर इस पे कम focus करना है. That we cannot do, that we cannot afford. Now we can come to this part. कि what problems we face in economics.
many of you might have read once or twice or more than that, या फिर एक बार भी नहीं कंप्लीट करा होगा. So what happens कि whenever we see any prelims question in the mock test or in prelims, UPSC prelims exam, what happens? Confusion starts. Confusion start क्यों होता है? Because it is not because you don't study enough. It is because you haven't revised it smartly. Economics में हम स्कोर बिल्कुल ऐसे ही नहीं कर सकते जस्ट बाय रीडिंग, है ना. मेमोराइज करके, रीड करके वी कैन नॉट स्कोर इन इकोनॉमिक्स. वी नीड टू हैव कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो स्कोर नहीं आएगा. दैट इज द प्रॉब्लम वी फेस इन इकोनॉमिक्स. और सिर्फ पढ़ा, मेमोराइज कर लिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नहीं बनेंगे इन द एग्जामिनेशन हॉल. अब ऐसा क्यों होता है इन द केस ऑफ इकोनॉमिक्स? बिकॉज व्हाट वी सी, देयर आर सो मेनी सिमिलर टर्म्स इन इकोनॉमिक्स. Take the example of national income accounting. So many income aggregates are there. GDP है, GNP है, NNP है, NDP है, GVA है, national income है, private income, personal income. So many things are there, and all these concepts are similar. है ना? There is a differentiating factor also, but similar terms, similar concepts are there. तो जब क्वेश्चन आता है इट क्रिएट्स कंफ्यूजन. टेक द एग्जांपल ऑफ बजटिंग. सो मेनी डेफिसिट्स आर देयर. फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट. सो मेनी डेफिसिट्स आर देयर. एक्सटर्नल सेक्टर, अगेन करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सिमिलर टर्म्स आर देयर. दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, कंफ्यूजन कम्स बिकॉज ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट्स. होता है ऐसा. And there are so many keywords in economics. So confusion comes from these things in economics. And also a lot more data is there in economics. Current affairs पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारा डेटा रहता है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि यार ये तो मुश्किल है कुछ. So whatever we read, if we don't understand in economics, if we don't have concept clarity, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. सो अब ये प्रॉब्लम है तो व्हाट कैन बी डन? दिस इज द प्रॉब्लम वी फेस इन इकोनॉमिक्स. व्हाट कैन बी डन? वी नीड टू रिवाइज इट. है ना? सारे सब्जेक्ट्स में यही करते हैं, सारे सब्जेक्ट में रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, बट इकोनॉमिक्स में रिवाइज करने के लिए वी नीड टू वर्क मोर ऑन कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन. यहां पे जब भी हम रिवाइज करने जाएंगे, वी नीड टू डू इट स्मार्टली. हाउ वी कैन डू दिस रिविजन थिंग स्मार्टली? वी नीड टू हैव क्लैरिटी इन द कॉन्सेप्ट्स. इफ वी आर गेटिंग क्लैरिटी, इट शुड नॉट बी लाइक कि एक हफ्ते के लिए क्लैरिटी है फिर उसके बाद चली गई. वी नीड टू डू कंसोलिडेट ऑल्सो. कंसोलिडेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कि जो समझ में आया उसको लॉक करके रख लिया. फॉर दैट वी नीड टू हैव मल्टीपल रिविजन्स. अब मल्टीपल रिविजन्स में क्या है कि अगर पूरा सिलेबस पढ़ना शुरू कर दिया, इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. करेक्ट? सो वी नीड टू फोकस मोर ऑन, एक तो हाई यील्डिंग टॉपिक from where UPSC is asking a lot more questions. Also, where we can see similar terms, similar concepts that also need to be cleared. Also, we need to track current affairs. करंट अफेयर्स के लिए तो अलग से क्लासेस होती ही हैं, या फिर यू माइट बी हैविंग BT 365 लाइक दैट.
वहां से करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हो, बजट के लिए अलग से क्लासेस होती हैं, डॉक्यूमेंट्स आर देयर, इकोनॉमिक सर्वे वहां से कर सकते हो, दैट इज फॉर करंट अफेयर्स. बट हियर व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स में what are the topics, like if it is there in the news that India is going to change base year, then we need to understand about what is the basic concept of base year, how base years are decided. उस पे आ गया question, correct? So here we are going to identify the topics which are coming in newspaper, in current affairs. उस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वाइल रिवाइजिंग. तो फोकस हमारा वहां पे होना चाहिए. जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा है उन टॉपिक्स को वी नीड टू फोकस मोर वाइल रिवाइजिंग, सो दैट वी कैन कंसोलिडेट दी कॉन्सेप्ट. सिर्फ रीडिंग रीडिंग करते जाएंगे, मेमोराइज करते जाएंगे, उससे हमारी बात नहीं बनेगी. इट वुड क्रिएट प्रॉब्लम, इट वुड क्रिएट कंफ्यूजन. सो दैट इज हाउ वी कैन रिवाइज थिंग्स. नाउ we are going to do quick revision in classes itself. या तो ऐसा कर सकते हैं, you can make a group जहां पे you are revising economics and कुछ concept clarity नहीं है, you can clear that concept. या फिर some focus areas which you cannot identify, someone else can identify and can tell you, and you are also agreeing to that. Okay, what is the logic why this topic is important for this year's UPSC exam? That is also important, so that can be done. So here the same way in quick revision classes we are going to do these things. Like what are we going to do in our quick revision classes? Before that we need to understand in these quick revision classes what we are not going to do. While like if you are also doing quick revision on your own, what you should not do, that is, do not rush through the syllabus. कि एक बार पढ़ लिया हमने, हाथ पांव इधर उधर सारे टॉपिक्स में डाल दिए. That should not be done. Do not just go after completing the syllabus. Correct? Try to see what are the things you are adding with that revision. What are the different concepts you are getting which is becoming more clear? How you are doing concept consolidation कि जिससे वो भूले ना. How you can identify these topics? I know well, इसमें जो concepts हैं ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, अब फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसमें सिर्फ एक चीज, जस्ट वन थिंग आई नीड टू सी, बाकी सब ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा. सो दैट आफ्टर एवरी रिवीजन व्हाट इज हैपनिंग कि आपका जो कंटेंट है दैट इज बिकमिंग लेसर एंड लेसर. करेक्ट? ऑल्सो क्विक रिवीजन दैट डज नॉट मीन दैट वी आर जस्ट trying to memorize things without understanding the concepts. क्विक रिवीजन का मतलब ये नहीं होगा कि हम सिर्फ फटाफट याद कर लिया लाइक हिस्ट्री, फिर उसके बाद हमने सोचा नहीं उसके बारे में कि हाउ what are the different concepts, what can be the impact, how we are defining this, what are different keywords, key terms involved, what are different meanings of it, अगर कुछ चेंज होता है तो क्या होता है. So these things we need to know. ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं रिवाइज करना है जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन कि हमने एक बार रिवाइज कर लिया पूरा इकोनॉमिक्स, वो तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो गया. करना क्या है, इस तरीके से वी नीड टू रिवाइज इकोनॉमिक्स सो दैट कि हम प्रीलिम्स में स्ट्राइक रेट 90% पे लेके जाए, सो दैट वी कैन हैव मोर एक्यूरेसी व्हाइल अटेम्प्टिंग इकोनॉमिक्स क्वेश्चन. ऐसे करना है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं करना है, यूपीएससी के लिए रिवाइज करना. करेक्ट? सो these are the things we are not going to do in quick revision.
What are we going to do then in quick revision classes? We are going to we are going to focus more on concept consolidation rather than concept buildup. So focus would be more on concept consolidation, not on concept buildup. क्योंकि फाउंडेशन क्लासेस में या फिर आपने जहां से भी पढ़ाई करी होगी, यू माइट बी हैविंग सम कॉन्सेप्ट्स, उसमें क्लैरिटी और कैसे ला सके, कैसे वी कैन कंसोलिडेट दोज कॉन्सेप्ट, उस पे फोकस वुड बी मोर. करेक्ट. देन we are going to focus more on the topics which are high yielding. High yielding topics from where UPSC is asking everywhere, every year so many questions, है ना. तो वो टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा होगा. ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ही नहीं या उसको रिवाइज नहीं करेंगे. रिवाइज देम, but focus would be more here. Also, we'll try to identify topics which are current affairs based. Like current affairs में कुछ topics हैं जो frequently आ रहे हैं. So we'll try to identify those topics and we'll try to see what are the static concept of that topic. वहां पे हम focus करेंगे because UPSC is asking this way the questions in UPSC prelims. तो वहां पे हमारा focus ज्यादा होगा. Also, our focus would be to identify the topics where we have more similar terms, similar concepts. क्योंकि similar concepts होते हैं, similar terms होते हैं, confusion भी ज्यादा होता है वहां पे. So what we can do, we can identify those topics where we can have more confusion. Where we can have more confusion. तो we'll try to revise in such a manner so that वो जो confusion है वो eliminate हो जाए. That is what we are going to do. So this way we are going to move forward in the classes. Correct. Ab, like this quick revision is completed, then what benefits you can have? In less time, you can retain more. You can retain more. So if you are also doing quick revision in your group, then this thing can happen. This thing can happen. क्योंकि other thoughts भी आते हैं, दूसरे लोगों के opinion आते हैं, other ideas आते हैं, like these topics are important. You feel that this is important, but others are saying it is not important. Correct. So there should be some logic to that. So that logic also आप सुन सकते हो. फिर उसको accept करना है, deny करना है, कर सकते हैं. Then you are going to gain confidence. In UPSC, confidence is very important. Correct. अगर confidence नहीं है, then what happens? Because in UPSC examination hall, you are going to feel pressure. तो वो pressure कम feel तब होगा when you have revised it smartly. When you are having some confidence on you that you have done it well. अंदर से आवाज आएगी तभी ऐसा होगा. So you need to do these things. You can have confidence. अब confidence है, so you will enter examination hall with confidence. है ना, ऐसा होता है, confidence से enter करोगे hall पे. अगर if you have that confidence कि मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है, अच्छे से revise करा है, correct. So these things are important. Now with this, I'm concluding this. What we need to do, revise करना है अच्छे से, अपने पे confidence लाना है ज़्यादा. So
Let's revise smartly. Let's revise strategically. Let's revise for UPSC, not for just satisfaction. अपने satisfaction के लिए नहीं करना. Thank you everyone. All the best.